concept of hybridization. Types of hybridization. First type of hybridization we have studied sp3 hybridization. एक हिंट सांगतो, हायब्रिडायझेशन ची डेफिनेशन पाठ करायची आणि त्या डेफिनेशन मध्ये थोडे थोडे चेंज करायचे प्रत्येक टाइप्स मध्ये. आता मी हायब्रिडायझेशन ची डेफिनेशन सांगतो मी तुम्हाला. मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ atomic orbital of same atom which have nearly the same energy to form new equal number of hybrid orbital of equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in the space of that atom is called as hybridization. Now if we have to define sp3 hybridization, how will you define? मिक्सिंग आणि रिकास्टिंग नंतर जेवढे ऑर्बिटल मिक्स होतात ते लिहा. मिक्सिंग अँड रिकास्टिंग ऑफ 1s and 3p. Mixing and recasting of 1s and 3p orbital of the same atom to form new 4sp3 hybrid orbitals to form new 4sp3 hybrid orbitals of equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation as it is ठेवायचं. प्रत्येक डेफिनेशन वेगळी करायची गरज नाही तुम्हाला. फक्त हायब्रिडायझेशन ची डेफिनेशन लर्न करा, समजून घ्या, पाठ करा आणि त्याच्यामध्ये थोडासा चेंज केला की आपला कुठल्याही म्हणजे हायब्रिडायझेशन ची डेफिनेशन करता येईल. नाउ सेकंड टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन. Here we are to study type of hybridization, that is second type of hybridization, sp2 hybridization. sp2 hybridization. So see what is sp2 hybridization. आता मी सांगितल्याप्रमाणे कशी करणार डेफिनेशन तुम्ही? मिक्सिंग and recasting. Mixing and recasting of, बताओ, how many s orbital? One s orbital. And how many p orbitals? 2p orbitals. 2p orbitals of same atom which have nearly same energy to form equal number, that is to form new 3sp2 hybrid orbitals of equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in the space of that atom, that is called as sp2 hybridization. Mixing and recasting of 1s orbital and 2p orbitals of the same atom, एकाच atom चे, to form new which have nearly the same energy to form new 3sp2 hybrid orbitals of equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in the space of that atom, that is called as sp2 hybridization. Means in the formation of sp2 hybrid orbital, 1s orbital and 2p orbital thoroughly mix up, redistribution of energy takes place and they form new 3sp2 hybrid orbital जिनकी एनर्जी सेम होगी, जिनमें ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिकल यानी क्या सिमेट्री होंगी और they have definite orientation in the space of that atom, that is called as the sp2 hybridization. Here we have to study two examples on the basis of sp2 hybridization, that is formation of boron trifluoride. Formation of boron trifluoride that we are to study. BF3 formation of boron trifluoride. Okay, here see
molecular formula of boron trifluoride is BF3. Molecular formula of boron trifluoride is BF3. So which is the central atom in boron trifluoride? B. Boron. Boron is the central atom. According to Lewis dot structure, central atom in case of polyatomic molecule, central atom is least electronegative. Generally central atom is less electronegative. अभी देखो इस बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में वी हैव स्टडीड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? Fluorine. यानी क्या बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन फ्लोरीन, and therefore boron is the central atom in BF3. So we have to study hybridization of that central atom boron. You see, boron in ground state, boron in ground state, what is its electronic configuration? That is atomic number of boron is 5. It is 1s2, 1s2, 2s, 2s2, 2p1. 2p1. Very good. Here 2s orbital contains 2 electron and 2p orbital contains only 1 electron. Okay. What is the valency of boron in BF3? 3. 3 valency. Means boron form 3 bonds with 3 fluorine. But here how many unpaired electron in its valency cell? 1. 1. यानी क्या? According to valence bond theory, valency of boron is not satisfied here, and therefore to explain its trivalency there is need of the excitation of electrons from lower energy orbital into higher energy orbital. So here excited state formation is required. Therefore what happens? One electron from this 2s orbital get excited, get promoted into this 2p orbital. So boron in excited state 1s2, 2s1, 2p2. Box diagram of electronic configuration in outermost shell, in valency shell. So this is nothing but the 2 unpaired electrons in 2p orbital and 1 unpaired electron in 2s orbital. There are totally 3 unpaired electron, and now its trivalency is satisfied, but after the excitation. So there are 3 unpaired electrons in its valency shell, and there are what? That is the 3 bonds formed by the boron. Therefore boron satisfies trivalency, and after this it undergoes the hybridization. अब ये hybridization कैसा होगा? इसमें 1s orbital of 2s and 2p orbitals of 2p, ये 2p के 2p orbital और 2s का एक orbital. So यहाँ number of orbital which participate are 3. And new hybrid orbital also form are 3. Therefore here see, boron in hybrid state in the valency shell of boron 1s orbital of 2s किती आणि कुणाचे असा सांगतोय मी तुम्हाला, लक्षात येते ना? किती आणि कुणाचे? 1s orbital of 2s, एक s orbital 2s का, 2p orbital 2p के, 2p के. So total number of orbital which participate in the process of hybridization, they are 3. So here it contains 1 electron, and it also contains the 1 electron. So thoroughly this 1s and 2p orbital mix up, and there is formation of new 3 sp2 hybrid orbitals, sp2 hybrid orbitals of equivalent energy, maximum symmetry,
and definite orientation in the space of that atom. अभी देखो बोरॉन के अराउंड, बोरॉन के बाजू में उस एटम में कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं? 3। अभी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? ये एक एक इलेक्ट्रॉन में ऑर्बिटल में क्या होगा? इसमें रिपल्शन. Here there is mutual repulsion, here there is mutual repulsion, here is also there is mutual repulsion. Okay, and therefore they will be settled at this position, they will be stable at this position, they will go as far as away from each other so as to have there are minimum repulsion between them and maximum stability. So they will be lie in this direction, and this is called as the orientation of that orbital. It is known as the orientation of this orbital. And can you tell me now, this is which geometry will be formed? Triangular or trigonal. Therefore this hybridization is also called as trigonal hybridization. It is also known as trigonal hybridization. Okay, now you see the shape of that 3sp2 hybrid orbital. Here you see this is nothing but one of the sp2 hybrid orbital. It is second sp2 hybrid orbital, and this is third sp2 hybrid orbital. So here what that is, the second lobe of the hybrid orbital is small, one of the lobe is large. Here there is presence of one electron, here one electron, and here one electron. Shape of, it is the shape of 3 sp2 hybrid orbitals of boron. Shape of 3 sp2 hybrid orbitals of boron in boron trifluoride. अभी देखो how the boron trifluoride is formed. Come towards this fluorine. We know atomic number of fluorine is 9. Its electronic configuration is 1s2, 2s2 and 2p5. अभी देखो इसमें 2s electron have 2 electron or paired electron. 2p electrons have what? That is the 5 electron. Here 3. It is 4 and 5. How many unpaired electron present in valence shell of fluorine? One unpaired electron present. Total number of electrons are 7. So it requires 1 electron to complete its octet. Therefore, which is the half-filled orbital of fluorine? P. And 3 half-filled orbitals of the boron, sp2 hybrid orbitals of boron. You see the orbital overlaps. Here this is nothing but sp2 hybrid orbital of boron, and here what? That is the sp orbital of fluorine. पहा इकडे overlap झालाय. Here there is sharing of electron and sigma bond is formed. दुसरे orbitals आहेत ना इथे. Here fulfilled another p orbitals of what? That is the fluorine. दुसरे fulfilled p orbital सुद्धा आपल्याला ड्रॉ करावे लागतील. पहा इथे कुठला ऍटम आहे? हा फ्लोरीन. Then second one sp2 hybrid orbital of fluorine. Then next one, what? That is the overlaps between the sp2 hybrid orbital of boron and f orbital of fluorine. Here what? That is the overlapping takes place in this way. Another one fluorine atom, its p orbital. Then next one fluorine atom, and what? That is the its p orbital. Here sigma bond. Then here what? That is in this way there is formation of the 3 sigma covalent bond. This is the orbital overlaps in boron trifluoride. Now you tell me which is this orbital? sp2. And which is this orbital of fluorine?
2p sp5 p ऑर्बिटल आहे हे 2p5 sp2 आणि p. म्हणजे जर असा क्वेश्चन असेल, व्हॉट टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओव्हरलॅप्स इन्व्हॉल्व इन बोरॉन ट्रायफ्लोराइड, then don't forget sp2p overlap involved in the formation of boron trifluoride. sp2p overlaps involved in the formation of boron trifluoride. And the last one point about it, here we have to study boron is present at the center, 3 fluorine atom present at the 3 corner, making a triangle. Here fluorine atom, here 1 fluorine atom, and here also 1 fluorine atom. So this is nothing but what that is the geometry of boron trifluoride. It is the geometry of boron trifluoride, and this bond angle is 120 degree. This is trigonal geometry of boron trifluoride. So, and this is the formation of boron trifluoride on the basis of sp2 hybridization or trigonal hybridization. So you have to remember, first of all, molecular formula of boron trifluoride is BF3. Boron is the central atom in this polyatomic molecule. So boron in ground state have this electronic configuration, 1s2 2s2 2p1. Boron in excited state, 1s2 2s1 2p2. 1 electron get excited from 2s orbital to 2p orbital. Boron in hybrid state, 1s orbital of 2s and 2p orbitals of 2p thoroughly mix up and they form new 3sp2 hybrid orbital of equivalent energy, maximum symmetry, and definite orientation in the space of that atom. So it undergoes sp2 hybridization. This is the shape of 3sp2 hybrid orbitals of what that is the boron. These are the sp2 hybrid orbitals of boron. Now in the formation of boron trifluoride, half filled sp2 hybrid orbital of boron 3 half filled sp2 hybrid orbital of boron overlaps coaxially with the 3 half filled p orbital of 3 fluorine atom, and there is formation of the new 3 boron fluorine sigma bond. This is nothing but the boron fluorine 3 fluorine present at the 3 corner, making a regular triangle, and therefore it is triangular planar. कुठली म्हणतात यालाच triangular planar or trigonal geometry of boron trifluoride, in which any bond angle if we measure, that is fluorine boron fluorine boron fluorine, or this fluorine boron fluorine is how much? It is the 120 degree. It is formation of BF3. Second one example here we have to study, that is the formation of ethylene molecule on the basis of sp2 hybridization. ethylene molecule. अभी आपका हाइड्रोकार्बन भी शुरू होगा. का चालू झालाय सर? काय झालाय ना? त्याच्यामध्ये येईल हाइड्रोकार्बन्स मध्ये अल्केन्स, अल्किन्स एंड अल्काइन्स. तो उसमें इथिलीन आएगा आपको. क्लासेस स्टूडेंट्स ने अजून चालू झालेला. आई विल स्टार्ट इट लेटर. हियर लिसन. द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ इथिलीन is C2H4. It is a hydrocarbon, and in hydrocarbon central atoms are carbon. No doubt they are more electronegative. But in other compound, polyatomic compound, central atom is less electronegative. So it is different. But generally I have told according to that Lewis concept. Okay, here the central atom is carbon. So what is atomic number of carbon? 6. In its ground state, its electronic configuration is 1s2 2s2 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 2p2 2p2 p2.
box diagram of this electronic configuration. Here it is 2s2 and 2p2. According to valence bond theory, we have studied earlier also, it should be divalent. But in all the organic compound, in all hydrocarbon, valency of carbon is 4. 4. It is tetravalent, which is not satisfied according to valence bond theory. Therefore, one electron from this 2s orbital get excited into 2p empty 2p orbital, and therefore here see carbon in excited state has this electronic configuration 1s2, 2s1 and 2p3. Okay, 2s orbital has 1 electron and 2p orbital has 3 electrons in its valency shell. Now there are 4 unpaired electrons, and observed valency of carbon in all the organic compound is 4. सगळ्या ऑर्गॅनिक कंपाउंड मध्ये किंवा कार्बनचा कोणताही कंपाउंड असेल, एनी कंपाउंड ऑफ कार्बन, यू विल ऑब्जर्व valency of carbon is 4. That is, it is tetravalent. It is tetravalent, and therefore here carbon undergoes the hybridization, that is the hybrid state. Hybrid state. Now here point 1 you have to remember and understand. In this molecule, carbon undergoes the limited hybridization, restricted hybridization, और इसको हम लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. अभी देखो कैसा लिमिटेड हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि अभी मुझे बताओ यहाँ कितने ऑर्बिटल अवेलेबल है? 4. मगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक कितने ऑर्बिटल चाहिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए? 3. यानी क्या एक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं होता. Even though it is available there, but that is not participate in the process of hybridization. So this is called as the limited hybridization. In the outermost shell of carbon, 1s orbital, and what that is the 2p orbitals of 2p. यहाँ 3p orbitals है, मगर उसमें से कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होते हैं? 2p. Here it is 1, 2, 3 and 4. Here 1, 2, 3 and 4. 1s and 2p orbitals of that carbon thoroughly mix up. There is formation of new 3sp2 hybrid orbitals of that carbon, leaving behind one pure atomic orbital. यानी क्या, एक प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल वो पीछे छोड़ता है कार्बन, उसको हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों की जरूरत है ना. फॉर्मेशन किसके मुताबिक कर रहे हैं हम? इथिलीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन के मुताबिक. अभी 1s orbital of 2s and 2p orbitals of this 2p means what is limited hybridization or restricted hybridization? Required number of atomic orbital participate in the process of hybridization, leaving behind some pure atomic orbitals. That is called as the limited hybridization or restricted hybridization. यानी कि जितने ऑर्बिटल की जरूरत है उतने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट होते हैं, और बाकी के ऑर्बिटल वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल करके पीछे छोड़ते हैं. अभी देखो यहां, दिस इज द प्योर p ऑर्बिटल. इट इज व्हाट? दैट इज द प्योर p ऑर्बिटल. ये देखो प्योर p ऑर्बिटल है ये. डज इट पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन? No. Only 2p orbital and 1s orbital पार्टिसिपेट हो गए. उन्होंने
3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किए, मगर यहाँ एक और p ऑर्बिटल था, उसको उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने वो अदर ऑर्बिटल ने उसको पार्टिसिपेट नहीं होने दिया करके वो प्योर p ऑर्बिटल पीछे छूट गया। अभी देखो कार्बन की इस स्टेट में वो ऑर्बिटल का शेप, ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा देखो अभी। हाँ, दिस इज नथिंग बट द कार्बन एटम प्रेजेंट एट द सेंटर। हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म? 3p, here 2, here 3, हो गए 3। अभी देखो इसको कनेक्ट करो, आ गई ना वही ज्योमेट्री, ट्रायंगुलर 1 Yes, sir. 2 3, ट्रायंगुलर आ गई। अभी इसमें एक प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल का शेप डम्बेल शेप। डम्बेल शेप। अभी उसको उसका शेप देखो, वही ऑर्बिटल देखो अभी, दिस इज नथिंग बट द प्योर p ऑर्बिटल ऑफ दैट कार्बन। आ गया समझ में? विच इज दिस ऑर्बिटल? इट इज sp2 ऑर्बिटल। दिस इज आल्सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, मगर ये ऑर्बिटल कौन सा है? प्योर p ऑर्बिटल। दिस इज प्योर p ऑर्बिटल, ये प्योर p ऑर्बिटल। अभी देखो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। देयर आर 2 कार्बन एटम्स इन इथिलीन, तो दोनों कार्बन एटम इन इथिलीन अंडरगोज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरे भी कार्बन एटम की सेम कंडीशन, सेम शेप होगी। इट इज द शेप ऑफ sp2 hybrid orbitals of carbon in ethylene। अभी देखो हमें ऑर्बिटल ओवरलैप करना है। कैन यू टेल मी हाइड्रोजन हैव हाफ फील्ड ऑर्बिटल? विच हाफ फील्ड ऑर्बिटल? Yes. First of all, one carbon atom form single bond with another carbon atom. How you see? Here there is one carbon atom, its sp2 hybrid orbital. Then here second carbon atom, its sp2 hybrid orbital. देखो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया, या ओवरलैप पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सिग्मा बॉन्ड हो गया, दोनों के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो गया। अभी स्ट्रक्चर आने वाला है बाद में इथिलीन का। ओके, ईच कार्बन देन हैव रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। देखो ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के, इधर भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन। ओके, नाउ देयर आर हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम इन इथिलीन? 4। Here it overlaps its half filled sp2 hybrid orbital with 2 hydrogen atom. It overlaps with half filled s orbital with hydrogen. Similarly here also half filled s orbital of hydrogen, half filled s orbital of hydrogen. Okay, now here there is pure p atomic orbital। देखो here also there is pure p atomic orbital, and this pure p atomic orbital of 2 carbon overlaps side wise। हे एवढ्या जवळ असतात की ते साइड वाइज ओव्हरलॅपिंग होते, मी दाखवतो तुम्हाला ती पण। here also एनी वन, एक कुठला तरी एका याला वर किंवा खाली। आता मला सांगा साइड वाइज ओव्हरलॅपने कुठला बॉन्ड फॉर्म होतो? Pi bond. Pi bond. This is the sigma bond. It is also sigma bond. This also sigma bond. It is orbital overlaps in ethylene molecule। समजतंय ना? पुन्हा सांगतो, sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल ऑफ 1 कार्बन, इथे कार्बन आहे, इकडे पण इथे कार्बन आहे, ओव्हरलॅप्स कोएक्सिली विथ द sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल ऑफ अनदर कार्बन फॉर्मिंग ए सिंगल बॉन्ड।
remaining 2 sp2 hybrid orbital by each carbon overlap with the half filled s orbital of hydrogen, forming another 2 single bonds by each carbon, and p atomic orbital with each carbon. प्रत्येकाकडे एक हे प्युअर पी ऑर्बिटल आहे. दे ओव्हरलॅप्स, इट ओव्हरलॅप्स साइड वाईज अँड पाय बॉन्ड इज फॉर्म. पाय बॉन्ड इज फॉर्म. मी तुम्हाला साइड वाईज ओव्हरलॅप दाखवतो आणि ते किती जवळ आहे हे आपल्याला दिसण्यासाठी, समजण्यासाठी, सेक ऑफ सिम्पलीसाठी आपण एवढा मोठा मॉलिक्यूल लिहिलाय. ऍक्च्युअली यू सी हिअर दिस इज द वन कार्बन अँड इट इज द अनदर कार्बन एटम. सिंगल बॉन्ड दिसतोय ना दोन्ही मध्ये? यस सर. आता पहा बरं का, याचं पी ऑर्बिटल हे आहे आणि याचं पी ऑर्बिटल हे आहे प्युअर. झाली का साइड वाईज ओव्हरलॅप? सांगा मला. यस सर. In this way the side wise overlap takes place. किंवा to this side also. In this way we can show, we can represent the side wise overlap. This is nothing but हे जे आपण मोठं दाखवलंय एवढं, ते ऍक्च्युअली असं असतं. ते एवढ्या जवळ आहेत कार्बन एटम. And this is the orbital overlaps in ethylene. So this is nothing but the formation of ethylene molecule. क्वेश्चन एकदम सिंपल असतो, आपण तसा विचारच केलेला नसतो, पण करायचा. सांगा टोटल नंबर ऑफ सिग्मा अँड पाय बॉन्ड्स इन इथिलीन मॉलिक्यूल. 4 sigma bond. अँड हाऊ मेनी पाय बॉन्ड? 2 pi bond. 2 pi bond. 1 पाय बॉन्ड. मी सांगितलं ना, इकडे ओव्हरलॅप झाला तर इकडे नाही, आणि इकडे ओव्हरलॅप झाले इलेक्ट्रॉन, इकडे पेअर झाले तर इकडे कसे होतील रे बाळांनो? मी दोन्ही पॉसिबिलिटी दाखवल्यात ना या पी ऑर्बिटल साइड वाईज ओव्हरलॅपच्या. आहे असं, हे एकच पी आहे का? हे दोन पिन, हे दोन पी दिसतात तुम्हाला? एकाचेच दोन लोब आहेत ना हे, आणि एक एकच इलेक्ट्रॉन आहे त्याच्यामध्ये. दे कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन. मग मला सांगा, एक इलेक्ट्रॉन या पीचा आणि एक इलेक्ट्रॉन या पीचा म्हणजे कार्बनचा ओव्हरलॅप झाले, 2 पाय बॉन्ड कसे फॉर्म होतील? हे पॉसिबिलिटी दाखवल्यात. आयदर दे ओव्हरलॅप इन दिस साइड ऑर दे ओव्हरलॅप इन दिस साइड. इकडे झाले तर इकडे नाही, इकडे झाले तर इकडे नाही, पण पॉसिबिलिटी दोन्ही दाखवल्यात. म्हणजे हाऊ मेनी पाय बॉन्ड? 1 pi bond. अँड हाऊ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 4 sigma. 4 सिग्मा बॉन्ड. ज्यांना ज्यांना दिसतेत ना त्यांनी एक तोंडात मारून घ्या. 5 sigma bond. किती? 5 sigma bond. 5 सिग्मा बॉन्ड. समोर आन्सर हो, विचारच करत नाही आपण, मोजले नाही, काही नाही, बस हे मोजले त्यांनी 1 2 3 4. हे काय हे? आणि मी किती वेळा ओरडून सांगितलं की पाय बॉन्ड कधीही एकटा नसतो. तो भित्रा आहे, तो वीक आहे, तो नेहमी कोणाबरोबर येतो? Sigma bond. Sigma bond येणार तो. And therefore sigma bond is present here, and this is nothing but the pi bond. We have to study last one point, that is the structure of ethylene molecular geometry. You see, this is the carbon-carbon single bond, carbon-hydrogen single bond. It is also carbon-hydrogen single bond. This is carbon-hydrogen single bond, and this is the double bond. हे पहा, एकदम simple structure आहे. Here this is pi bond. It is sigma bond, sigma bond, sigma bond. It is also sigma bond, and this is also sigma bond. It is the structure of ethylene molecule. Any bond angle if we measure, it is 120 degree. हे पहा, असं तुम्हाला ट्रायंगुलर कसं दाखवता येईल? हा हायड्रोजन आणि कार्बन जोडा, हा हायड्रोजन आणि कार्बन जोडा. You this connect this carbon hydrogen, this carbon hydrogen. So which is this geometry? Triangular geometry, triangular planar, triangular planar geometry, geometry of ethylene molecule. So here planar का म्हणतात ते मला सांगायचंय आता. बघा बरं का, BF3 or you can take acetylene, sorry ethylene. मला सांगा BF3 मध्ये किंवा इथिलीन मध्ये, here this is one carbon, here it is one carbon, sp2 hybrid orbital overlap with the sp2 hybrid orbital of another carbon, right? Yes sir. Yes sir. sp2 hybrid orbital, sp2 hybrid orbital. इथे हायड्रोजनचं ओव्हरलॅप झालं, इकडे हायड्रोजनचं ओव्हरलॅप झालं, इकडे कार्बनचं.
परत या कार्बनची अवस्था अशी आहे, लक्षात येते का? Yes, sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हायब्रिड ऑर्बिटल. मला सांगा हे सगळे ऍटम एकाच प्लेनवर आहेत का नाही? Yes, sir. एकाच Yes, प्लेनवर sir. आहेत, एकाच प्लेनवर आहेत. आतमध्ये एखादा ऍटम आहे का इकडे? No, sir. नाही. नो सर. नाहीये. इथे ऍटम आहे का एखादा असा? No, sir. नाही. नाही. म्हणजे याला डेप्थ आहे का ह्या जॉमेट्रीला? No, sir. So it is called as the planar geometry किंवा BF3 घ्या तुम्ही. Boron is present at the center and 3 fluorine atom at 3 corner. तो अभी देखो ये all atoms are present in one plane. So therefore it is also called as the planar geometry. It is two-dimensional geometry or it is the planar geometry. It is not three-dimensional. It has no depth. That is nothing but the formation of ethylene. आणि 3 मार्काला क्वेश्चन विचारतात. Explain the formation of ethylene on the basis of sp2 hybridization. किंवा फक्त hybridization देतील. So we should know what is the hybridization of carbon in ethylene. बताओ कौन सा hybridization है? sp2. sp3. Or they can be asked in this way. Explain the formation of BF3 on the basis of hybridization, that is sp2 hybridization. And now we have to study one more type of hybridization and detail, that is formation of the molecule on the basis of that third type of hybridization. So see, लिहा तुम्ही लिहा नोटबुक मध्ये sp hybridization. sp hybridization लिखो और उसका डेफिनेशन लिखो जल्दी जल्दी. sp hybridization. समोर आहे तुमच्या, थोडासा बदल करायचा. यू हॅव टू क्वाइट चेंज इन दॅट डेफिनेशन. काय लिहिलं सांगा? 1s orbital and 1p ऑर्बिट. 1p orbital. 1p orbital. to form new 2sp hybrid orbital of equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation. कंप्लीट करो डेफिनेशन पहले जल्दी जल्दी. और मैंने आपको हिंट बताई है कि कैसे डेफिनेशन तैयार करना है आपको हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेशन से. sp3, sp2 and now sp. Mixing and recasting of 1s orbital and only 1p orbital of the same atom which have nearly the same energy to form new 2sp hybrid orbital of equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation, that is called as sp hybridization. इसे डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं. राइट इन ब्रैकेट डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन. डायगोनल यानी कि इसको कितने साइड्स होंगे? 2 साइड. 2. ट्राइगोनल यानी कि कितने साइड्स दे? 3. 3. और टेट्रागोनल को कितने साइड दे? 4. 4. हो गई डेफिनेशन? Yes, यस sir. सर. Yes, sir. जल्दी जल्दी लिखो. स्पीड बढ़ाओ आपका. स्पीड बढ़ाने का हो गई, प्रैक्टिस sir. करो. Done, sir.
झालं सर. झूम का हम्म नहीं आलं. Okay, we have to start now its examples. Examples of what that is the SP hybridization. First example I have taken, I think it is not given in the book, but it is the simplest and important example of the SP hybridization. What is the central atom in beryllium difluoride? Beryllium, less electronegative. So continue with me. Beryllium, atomic number 4, in ground state, its electronic configuration 1s2 2s2 2s2 2p6. 2p0. 2p0. मग चुकीची गोष्ट ऐकून नाही घ्यायची बाळांनो कधीच. सहन पण नाही करायची. लक्षात येते का? Yes, sir. Yes sir. चुकीची गोष्ट ऐकून पण घ्यायची नाही आणि सहन पण करायची नाही. लगेच सांगायला पाहिजे होतं सर 2p0 कसं 2p6 कसं म्हणताय? तुमचं लक्षच नाही. मी म्हटलो 2p6 पण लिहिताना काय लिहिलंय 0. Write down box diagram electronic configuration of this. 2 electron in 2s orbital and what that is the 0 electrons in 2p orbital according to valence bond theory. मैंने आपको पहले भी बताया है बेरिलियम की वैलेंसी क्या होनी चाहिए थी? 2. ए बाळा, अरे कमून एवढा जोर देतो? त्यालाच बोलतोय मी बोलणं. 2 गडबड कसली झाली तुला? अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बेरिलियम की वैलेंसी क्या होना चाहिए? 0. 2. 0. But in this compound valency of beryllium is 2. It is divalent. So excited state formation is necessary. Here 1 electron from 2s orbital promoted into 2p orbital. Therefore, beryllium in what that is the excited state 1s2, 2s1 and 2p2. Sorry, 2p1, 1 electron get excited. 1 electron in 2s orbital and only 1 electron in 2p orbital. अभी देखो बेरिलियम के आउटरमोस्ट सेल में से एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल में थरोली मिक्सिंग रिकास्टिंग होती है और नए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं. कौन से? sp. So here beryllium in hybrid state, beryllium in hybrid form, hybrid state, very simple and short. 1s orbital of 2s, only 1 p orbital of 2p, thoroughly mix up and there is formation of new 2sp hybrid orbitals of equivalent energy, maximum symmetry or definite orientation in the space. अभी orientation हमें देखना है. That is very important and interesting part. Imagination is important than your knowledge. आप जितना इमेजिन ज्यादा करोगे उतना नॉलेज तो बढ़ेगा मगर समझ में ज्यादा आ सकता है उसमें. अभी इमेजिन करो यहाँ बेरिलियम का एटम है. क्या है? इधर बेरिलियम का एटम है और बेरिलियम के एटम में आउटर मोस्ट सेल में वैलेंसी सेल में एक s ऑर्बिटल आ गया, एक p ऑर्बिटल आ गया उसका. बोथ कंटेन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन. उसमें मिक्सिंग हो गई, रिकास्टिंग हो गई, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज हो गए और देखो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म हो गए. अभी मैं इस 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को ऐसे दिखाऊं क्या आपको? No sir. No, sir. Does this No, sir. orientation is 180 correct? Linear. Does this orientation is correct? No sir. No, sir. No, because both contains one unpaired electron.
और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? अट्रैक्शन। रिपल्शन होता है, रिपल्शन। रिपल्शन होने का एक मुख्य कारण है वो इलेक्ट्रॉन पे सेम चार्ज है, दे हैव लाइक चार्जेस। देखो बच्चे, अभी ये ऐसे एक में अब यानी कि एक दूसरे से दे विल गो फार अपार्ट फ्रॉम, दे विल गो फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, नहीं रहने का हमें एक दूसरे के पास। अभी देखो, अभी कुछ बोलेंगे कि नहीं सर और दूर भेजो इनको, भेज रहा हूं मैं, भेज रहा हूं। अभी आ गए क्या और दूर? नहीं, अभी नहीं। नो सर। No, sir. And this is the maximum distance they appear from each other. This is the maximum stability they attain at this position. अभी देखो, इस साइड को एक ऑर्बिटल गया, इस साइड को गया, दो साइड को दो गए, तो इसको कहते हैं डाइगोनल। क्या कहते हैं इसको? डाइगोनल। द डाइगोनल। और एक रेषा दिसतात का तुम्हाला? हे यस सर। Yes, sir. लीनियर। इसे और भी क्या कहते हैं? लीनियर। अभी देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप, बेरिलियम is present at the center. This is one of the sp hybrid orbital. This is another sp hybrid orbital. So this is nothing but 2 sp hybrid orbital of beryllium. फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, फिर भी एक बार बताओ। 1s2, 2s2, 2p5. We know fluorine have one unpaired electron in outermost shell of p orbital. So that half filled p orbital and this half filled sp hybrid orbital of beryllium overlaps coaxially, axis to axis. देखो अभी, here there is a beryllium. This is nothing but hybrid orbital of beryllium. इधर का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके छोटे लोब तो इधर ही आएंगे ना, एक इधर और एक इधर। अभी देखो, p ऑर्बिटल का हाफ फील्ड p ऑर्बिटल फ्लोरीन का हो गई ओवरलैप। दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ये दो ऑर्बिटल है फ्लोरीन के, अनदर 2 ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन which is fulfilled. Then here also overlap between the p orbital of fluorine and sp hybrid orbital of beryllium. Here you see another 2p orbitals of fluorine. Here this is nothing but the fluorine atom and it is also fluorine atom. Here there is beryllium. Okay, this is the orbital overlaps in beryllium difluoride. इसको हम कहेंगे ऑर्बिटल ओवरलैप्स। और एग्जामिनर आपको पूछेगा कि व्हाट इज द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप्स इन BeF2, तो आपका आंसर क्या आएगा? बेरिलियम डाइफ्लोराइड में कौन से टाइप का ओवरलैप है? 2sp hybrid orbital of beryllium and p orbital of fluorine. Therefore this overlap is spp overlap. कौन सा ओवरलैप है? spp overlap. Last one point about its geometry. देखो, this is one fluorine atom, it is another one fluorine atom, so it is diagonal or linear geometry of beryllium difluoride BeF2. This bond angle is 180 degree. This bond angle is 180 degree. This is the formation of BeF2 on the basis of sp hybridization. Simple. Beryllium in ground state have no unpaired electron. It should be zero valent according to valence bond theory, but it shows valency 2 in its compound. One electron from 2s orbital get excited into 2p. So excited state electronic configuration क्या है बेरिलियम का? 1s2, 2s1, 2p1. Then 1s orbital of 2s, 2p orbital of 1p orbital of 2p mix up and they form new sp hybrid orbital of what, that is the beryllium. अभी देखो, दो ऑर्बिटल मिलके 100% है, तो एक ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा?
50%. 50%. तो आपको क्वेश्चन ऐसा होता है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ s ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन sp hybrid orbital? 50%. 50%. What is the percentage of s orbital in sp2 hybrid orbital? 50%. 50. अरे sp2 च विचारलं रे मी. 25. 33.33 33. एक्झॅक्ट सांगायचं, पास नापास नाहीये 35 सांगायला. 33.33. and what is the percentage of s orbital in sp3? 25. very good, 25. 25. अभी देखो, this is the shape of 2 sp hybrid orbital of beryllium. It is the orbital overlap sp hybrid orbital of beryllium, p orbital of fluorine. sp hybrid orbital of beryllium, p orbital of fluorine. They overlaps coaxially and form 2 sigma bond. And this is the geometry of beryllium difluoride, that is BF2. All atoms are present on the same plane and in one line, linear or diagonal geometry, in which bond angle between fluorine, beryllium, fluorine is 180 degree. 180 degree. देखो अभी second example, we have to study formation of acetylene on the basis of same hybridization. Molecular formula of acetylene is C2H2. It is a alkyne. Now you see carbon atomic number 6 in ground state, 1s2, 2s2, 2p2, 2s orbital, 2 electrons, and what that is the 2p orbitals, 2 electrons. As I have already told you, and you know also, carbon in its all organic compound or carbon compound shows the fixed valency, that is the 4 Tetravalency. tetravalency, which is not satisfied by valence bond theory, and therefore carbon undergoes the excitation. 1 electron goes into this 2p orbital, excited state electronic configuration 1s2, 2s2, 2p3. Here 1 electron in 2s orbital and 3 electron in this 2p orbital. Now no doubt there are 4 half-filled atomic orbital in valency shell of carbon, but here also required number of atomic orbital participate in the process of hybridization, leaving It's behind true. some pure atomic orbital, and that is called as the restricted or limited hybridization. अभी देखो इसमें कार्बन इन hybridized state, hybrid state. अभी देखो इसमें 1s orbital of 2s and only 1p orbital of 2p thoroughly mix up and they form new 2sp hybrid orbital. देखो यहाँ 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं और 2 ऑर्बिटल प्योर यहाँ रहते हैं. So it is 2sp hybrid orbitals of carbon, and these are the 2 pure atomic orbital. These are the 2 pure atomic orbitals. So that is nothing but the sp hybridization. देखो कार्बन, एक कार्बन की स्थिति में आपको बता रहा हूं. Here there is 1 carbon, sp hybrid orbital in this direction, 1 sp hybrid orbital in this direction. 2 साइड को 2 जाएंगे. अभी मुझे बताओ इसमें कितने प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल है? 2. देखो इन 2 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल, दिस इज वन ऑफ द प्योर p एटॉमिक ऑर्बिटल and this is another pure p atomic orbital. It is sp. This is also sp, and these are the pure p orbitals of that carbon. Pure p orbitals of that carbon. समझ में आ रहा है ना? It is the orbital shape of carbon.
अभी देखो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल, you consider here orbital overlap. Here this is the carbon atom, sp hybrid orbital of one carbon, sp hybrid orbital of another carbon, it is the sigma bond. झाला का? दोन मध्ये सिग्मा बॉन्ड तयार एक झाला. Here there is one sp hybrid orbital of this carbon आणि one sp hybrid orbital of this another one carbon. हे दुसऱ्या कार्बनचं sp hybrid orbital आहे पहा. It overlaps with the s orbital of hydrogen, overlaps with the s orbital of hydrogen. Here there is formation of sigma bond, here also there is formation of sigma bond. अभी इसके देखो, it is one of the p orbital of carbon, p1, another one p orbital of carbon, p1. Here this is p orbital of carbon, p1, and it is p orbital of carbon, it is p1. अभी देखो साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग देखो, दिस ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद दिस ऑर्बिटल, साइड वाइज ओवरलैप होगी इसमें. और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है इसमें साइड वाइज ओवरलैप की सेकंड पॉसिबिलिटी. मुझे बताओ ये कौन सा बॉन्ड होगा? पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड. अभी दूसरा पाई बॉन्ड देखो. हाँ, दिस ऑर्बिटल ओवरलैप्स laterally, sidewise in this way. So these are nothing but the formation of this is another one pi bond. It is the orbital overlaps, orbital overlaps in what that is the ethylene molecule. अभी मुझे बताओ आप carefully, answer is on the board in front of you. How many sigma and pi bond present in one molecule of acetylene? 3 sigma 2 pi. 3 sigma 2 pi. 3 sigma and 2 pi. Very good. There are 3 sigma bond. Here you see between two carbon atom 1 sigma bond, between in carbon and hydrogen 1 sigma bond, 3 sigma bond, and there is a triple bond. Triple bond contains the 2 pi bond. अभी देखो इसकी ज्योमेट्री देखो, कार्बन कार्बन, here sigma bond pi bond, right? Here also carbon, हे पाइकडे हाइड्रोजन, and here also hydrogen. आप मुझे बताओ इसमें कौन सा एंगल होगा? 180. 180. This is the linear or diagonal geometry in acetylene. Acetylene. This is nothing but the linear or diagonal geometry in acetylene. So this is nothing but the total 3 type of hybridization in detail we have studied. This is study of 3 type of hybridization in detail, and later hybridizations are also there. Listen and understand. sp2d, sp3d, sp3d2, sp2d2, but they are not in detail. Later only we have to study if the central atom undergoes sp2d, what is the geometry and bond angle. sp3d, geometry of molecule and examples in which they undergoes that type of hybridization. sp3d3 also. So that we have to continue tomorrow.